guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. This is a very special video, and before we get into it, I just want to tell you one thing. I am very sorry and I'm very grateful कि आप लोगों ने ना सिर्फ मुझे अकाउंटेबल रखा बट यू हैव ऑलवेज बिन सपोर्टिव एंड इन द पास्ट 2 weeks it's been 15 days since I posted anything over here. I have 10 projects lined up. बहुत सारे complete हो चुके हैं. I just feel like I have taken too much on my plate. So this is like us talking about how are we going to manage our relationship going forward. I think you can still expect 2 to 3 videos from me per week. I am going to put my heart and soul into it as usual. Abhi I'm just going to get some self-care done while I talk to you. Account for the last 2 weeks कि क्या चल रहा था, and there is something super fun planned in this video जो कि आपको शायद टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा. तो ये हुआ कि पिछले से पिछले हफ्ते I got my period and I was PMSing too hard and everything was like crumbling down, and I like not doing medicine at the moment has taken a huge toll on my mental health because like medicine took a huge chunk of my energy throughout the day. Now I have like a lot of time in the day. Sometimes I don't know what to do with it. I've been so toxic to myself that I don't find rest productive. So it's like a guilty rest period, and I have been trying to take rest in the way it is supposed to be taken and enjoy the process of writing, creating unique pieces of content and experimenting with those things. बड़ा मज़ा आ रहा है, बट ऑनेस्टली वो गिल्ट वो बहुत रियल है. एज अ मेड स्टूडेंट यू हैव बिन रेज्ड इन अ वे टू काउंट योर टाइम एंड सारा टाइम बस तुम पढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ कोर्स यार 19 सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा पढ़ना है, तुम नहीं देख पाओगे यार सीरीज़, तुम्हारा मिस हो जाएगा. मेरा एक दोस्त होता था, वो सीरीज़ के साथ साथ पढ़ाई करता था और मतलब कभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना वगैरह, बट आई हैव सीन वन ऑफ हिज काइंड और मे बी 2. बहुत सारे लोगों से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं. And it's absolutely normal for med students to go through this phase of isolation while they're preparing for their boards, and maybe even while they're working on tough shifts like EDs etc. Coming from there, it just made me feel very guilty कि I am not doing enough और मैं जो भी कर रही हूँ वो सही नहीं है. While I really enjoyed the freedom that this current path gives me, where I have to work from here, I don't have to go anywhere, I can write whatever I want, I can experiment with things. It's all like working out, but it's taking its own time abhi because it's fresh. I have done this before partially, and अभी इसे full time करने में it's more important I feel कि I win my own oopsie. So yeah, like it's very important for me to look after my health because इतने सालों तक I've just neglected myself mentally a lot, and it's like a pendulum is swinging. तो पहले it was swinging to that extreme, to the plus extreme, now to the minus extreme rather. Now it should not go to the plus extreme, it should be dangling somewhere in between in the moderation range. Achieving that is not always easy, but yeah, what are we if we don't try enough. उसके बाद में I went and got some crockery. बड़ा मज़ा आया crockery वगैरह लेने में, बहुत सारी चीज़ें करी. एक दिन तो मूवी देखी थी, उस रात को I found a very cute doggo, and ये सब चीज़ का ना vlog वगैरह भी किया हुआ है. मैं इसको प्रॉपरली एक व्लॉग में कंपाइल करके अपलोड कर दूंगी बिकॉज इट्स टू क्यूट. आई रियली एंजॉयड दोज लिटिल मोमेंट्स हियर एंड देयर. बड़ा मज़ा आता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें देख के कि बचपन की सारी विशेस पूरी हो रही हैं अपने आप को, लेकिन थोड़ा टाइम देने का ना एक स्पेस नहीं है. इट फील्स लाइक एवरीबडी इज इन सम रश एंड द एंटायर लाइफ हैज समहाउ बिकम अ टू डू लिस्ट, एंड द स्ट्रेस हैज लिटरली कॉज्ड मी टू ब्रेक आउट. लाइक कैन यू सी, लाइक आई हैवंट बीन डूइंग वेल. दिस इज़ लिटरली द प्रूफ ऑफ इट. भाई मैं ध्यान नहीं रख पाई अपने आप का, नहीं हो पाया मेरे से. आई हैव लिटरली शट डाउन, हैड मैनी मेल्ट डाउन्स. इस सब के बीच में मैंने हेल्थ का ध्यान रखा. आई केप्ट मूविंग, आई केप्ट डूइंग माई स्टेप्स, आई केप्ट डूइंग वट एवर आई कुड, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज वेन एवर आई हैड एनी सॉर्ट ऑफ हाइज और लोज इन लाइफ, वर्किंग आउट इज द वन कॉन्स्टेंट, द one anchor that has lifted me up from like a happy place to the happiest place, and if I'm not so happy then it picks me up to a happy place. So there's no downside to working out. अच्छे से सही फॉर्म में करो, इंजरी ना करो, तो it's all good. And
this little graph that you're seeing over here, I am so excited to talk about this. Okay, so all the medicos out here, I'm sure you all know what I'm talking about. So this is basically the menstrual cycle. ये uterine lining है. This is the ovum. These are your hormones, and this is the basal body temperature. और ये 28-day cycle है. Important thing that I want to mention here, and something that I have tried myself in the past few weeks, and that has really worked for me, is cycle syncing. तो बेसिकली अगर आपका हार्मोनल साइकिल ये है तो इस हार्मोनल साइकिल के हिसाब से यू आर गोइंग टू गेट योर वर्कआउट डन अकॉर्डिंग टू दिस. अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव नोटिस्ड कि उनके साइकिल के अराउंड, लाइक मे बी इफ दे आर हैविंग देयर पीरियड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days और फर्स्ट 7 days ऑफ द पीरियड, जहाँ पे जिस हिसाब से ये साइकिल बनाई गई है, तो इस टाइम पे दे आर नॉट फीलिंग वेरी एक्टिव. दे आरंट एबल टू डू अ लॉट ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग और hit the PRs. इस टाइम पे बेस्ट रहेगा कि आप लोग सारे के सारे योगा कर लें या फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें और मतलब बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा वॉक कर लें. नॉट 10K स्टेप्स बट मे बी लाइक 3K स्टेप्स और 5K स्टेप्स. ऐसे ही टेरेस पे टहल लिए, कॉल करते करते बात कर लिया, जो भी है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम इस पीरियड में. उसके बाद में व्हेन वी हैव आवर फोलिकुलर फेज, तो फोलिकुलर फेज में क्या होता है कि ओवम तैयार हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के पहले तक यहाँ पे दिस इज लाइक अ वेरी गुड पीरियड बिकॉज योर हॉर्मोन्स आर गोइंग टू पीक ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन. तो ये टाइम पे आप जिम कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ पे यू कैन पुश योर सेल्फ टू गिव योर बेस्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई थिंक आई केप्ट माई रोज वाटर हियर इटसेल्फ, पर अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है. Okay, never mind. So, as I was saying कि follicular phase में you can go to the gym, push yourself, and ovulation के time पे best part होता है कि you can hit your PRs. जो भी like deadlift कर रहे हो, squats कर रहे हो, barbells कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके अंदर you can be your beast self. You can give your 100%. नहीं भाई मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, because all your hormones are supportive. So like day 14th peak prime day of your entire month, and ये period like day 14 के बाद 15, 16, 2 days after and 2 days before also. Very nice, very golden period. मज़ा आता है workout करने में, एकदम बढ़िया वाला workout हो जाता है. एंड देन उसके बाद में डे 14 से लेके डे 21 तक योर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स विल राइज, एंड डे 21 टू डे 28 मोस्टली PMS का वो 1 week रहता है. तो बेसिकली दिस 14 days आर नॉट गोइंग टू बी योर डेज अगेन. या early luteal phase में you can push yourself, you can go to the gym, you can try getting some work done, you can try hitting some PRs, but you need to be a little bit more kind to yourself. But late luteal phase में PMS के टाइम पे I would suggest कि हम लोग सारे के सारे मिलके chill करें, थोड़ा काम रहें, थोड़ा अपने आप को टाइम दें इस हिसाब से कि हमारा बॉडी सपोर्ट मांग रहा है और हम उसे सपोर्ट प्रोवाइड करें. इट्स नॉट ग्रेट to always go against the grain. Sometimes you have to go with the grain because that's the best thing you can do for yourself and for your body, not just like temporarily in this moment but over a period of time. It will come in super handy. I'm very proud of this diagram. I'm very proud of this cycle syncing thing because it has literally changed my perspective towards my body, towards how I feel things. And there was a time where I couldn't talk while I did my makeup, and I also doing that अच्छे से. I'm very happy because मेरे से ये सही में नहीं हो रहा था in the beginning. I cannot synthesize content that I don't believe in, that doesn't sit well with me. ये वो स्कट वर्क नहीं है. मतलब बोलते हैं कि जो भी काम करो पूरे दिल से करो. 100% I agree. But when I used to do like the filling files thing during internship, I couldn't do it. I couldn't do that with all my heart. नहीं हो रहा था मेरे से, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था. It did not give me any satisfaction. It did not make me feel happy about myself. It felt like procedure work, and I don't want the work. I really worship work, so I don't want work to become something that I don't enjoy, something that I'm just synthesizing because I have to. I always believe in money comes as a byproduct of your hard work, of your effort, of your love, of your passion towards the work, of the sadhana, devotion, the tapasya that you do towards the work. और ये चीज़ जब आप पूरे मन से करते हो, पूरी
क्यूरियोसिटी के साथ करते हो, पूरा ऐसे दिल लगा के करते हो, तो भाई पैसे क्या चीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या चीज़ है, यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट द डे एंड एज दैट वी आर लिविंग इन. It's just like I cannot believe that today I can sit at home and get work done while I do my makeup. So it's one of the dreams come true and I'm very grateful. Like मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा grateful हूँ, and at times when I'm not able to do justice to it, that's the reason why there's a further like a vicious loop कि मतलब काम भी नहीं हो पा रहा है, मैं justice भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है. So sometimes it's just like snap out of it and try and talk about the things that you believe in. Communication is like the best thing in the whole wide world. I just made beautiful coffee for myself. I'm very happy that I have coffee in my hand and I'm voicing out exactly how I feel. I'm talking about this beautiful diagram right here. I'm doing my makeup and wow, I'm privileged. I'm so grateful that I'm educated and I am who I am. Like I'm very very grateful. बातों में ना इतना ज़्यादा I got carried away. I absolutely forgot to do my makeup. अभी हम लगाएंगे foundation. These days it's pretty hot. I just want to go to a nice cold place. I'm so sick and tired of the धूप and the गर्मी here. पता नहीं भाई मैंगोज वगैरह तो ठीक है पर it's not helpful. मज़ा नहीं आ रहा है. Instagram पे I've been talking a lot about health and productivity these days. That's something I'm very very proud of. At one point it was impossible for me to just talk like this to a camera, but today it's my second nature and like bhai all these 15 days whenever I felt low, I read so many books, I listened to, I tuned into so many audiobooks and they helped me change my perspective so much. Diary of a CEO, Andrew Huberman, Sid Warrior, इन सब की जो पॉडकास्ट हैं उनको सुनती और ये सब सुन के मेरे को रियलाइज़ होता कि भाई I really enjoy learning and I'm not the kind of person who can consume a lot of short form content. Just like I can focus on long form content for a long time and that's what like makes me very happy. No कि I'm that person. हाँ, I can focus for long hours. मज़ा आता है. Yeah, I will be making my vision board. Yes, I am 4 months late, but we still have 8 months in 2025 and we're going to try and achieve everything. I feel like I'm ready for gym, so I'm going to join gym in the month of May. I'm going to take care of my mental health even better. I'm going to set stronger boundaries, maybe even go back to therapy because I feel like I'm a failure to my therapist. उसने एक बात मेरे को बोली थी बाउंड्री सेट करने के लिए और मेरे से वो नहीं सेट हो पा रही. आई हैव बीन सच अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट दैट आई फील लाइक आई हैव लेट माई थेरेपिस्ट डाउन एंड आई हैव इन टर्न घोस्टेड माई थेरेपिस्ट विच हैज़ इन टर्न कॉज्ड द लेट डाउन द डिसअपॉइंटमेंट. आई फील आई एम प्रिज्यूमिंग आई एम probably overthinking here, but it's okay. We are going to nourish our relationships, be true, be honest, and communicate with all our heart exactly what we feel, even essay digitally where people can get away with anything. I would like to be the person who even fails in public. How bad is it कि आप सिर्फ अपनी wins बता रहे हो, आप अपने failures नहीं बता रहे हो? If this is your house, do you always walk in the door winning? I don't think so. You come to your parents, to your family members. Most days it's okay, it's neutral. Some days it's very good and there are few days where it is very bad. But it's like a wholesome thing. आप एक पूरा package लेके आ रहे हो, right? And it's only fair that you bring that entire package to the social media platforms as well. No matter how overwhelming it gets at times, but I think that's the right thing to do. And my makeup is done. I am very very excited because now I will be going out for some time and I'll chill for a bit. Yeah, I hope this video was helpful. You can expect 2 to 3 videos from me. कोई भी comment में suggestions वगैरह डाल देना जो भी videos देखने हैं and I'll try to make particular videos for your requests. I'm so happy to be able to do this. Lots of love. Have a good one.